everyone, my name is Furia and you're watching HR Learning Studio and I warmly welcome all of you guys over here. I hope you guys are doing well and also practicing English language. So as you guys know that we are working on the grammatical mistakes and also the basics of grammar that include parts of speech, the tenses, and third one is sentence structure. So in this series, in these videos, all these upcoming videos, we're gonna cover all the parts of speech, that how we can use the part of speech in the tense, the sentence, and what are the importance, what kind of function they are performing to make the sentence grammatical perfect. Last time मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हम प्रोनाउन को कैसे यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर अगर किसी वर्ड को किस सेंटेंस को सुने तो कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें प्रोनाउन क्या है. So in the same way we're gonna discuss about the adverb, कि हम adverb को कहाँ पे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, what is the reason behind that, हमें उसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है. Adverb actually ऐसा word होता है, that is the word that is used to expand, you can say to modify, that give us support to the verb. For example, अगर आप कहें कि verb ऐसा कोई word है जो कि किसी action, किसी experience को explain करता है, मतलब कोई भी experience या कोई काम हो रहा है उसे हम verb कहते हैं, तो adverb ऐसा होगा जो उसमें मतलब क्या है कि उसे modify कर देता है. I started working in that company. इसमें बस ये बताया गया कि मैंने उसमें उस कंपनी में काम करना स्टार्ट. अगर अब हम इस सेंटेंस के पीछे एक और सेंटेंस या एक वर्ड लगाते हैं, मतलब कुछ वर्ड लगाते हैं, that few years before or few months before I started working in this company. मतलब पहले हम इस सेंटेंस को यूँ बोल रहे थे कि I started working in this company. Simple कि मैंने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया या शुरू किया. But instead of that, if we will say that few years before or few days before, या कह सकते हैं कि few hours before, I started working in this company. So ये टाइम बता रहा है कि पहले तो ये था कि हमने ज्वाइन किया है, ये नहीं पता कि कब किया है, कि क्या रीजन, क्यों, किस टाइम जोन में किया था. But now we are clear about it that few years before. In this way, you can use the word adverb to explain and to elaborate and to modify the verb. So I hope you guys have got it, like how we can use the adverb in the sentence while making the sentence. How we can make our sentence grammatically perfect. So अब मैंने बता दिया कि अब आपकी बारी है. बताएं मुझे कमेंट्स में कि आप कैसे यूज कर सकते हैं वर्ड को. मुझे एक या दो सेंटेंस है जो आपका दिल करे, मतलब सेंटेंस में यूज करके बताएं कि कैसे आप किसी वर्ब, मतलब सिंपल एक सेंटेंस है उसके अंदर adverb को कैसे यूज कर सकते हैं. Please let me know in comment section, and if you will make any mistake, I will try my best to correct the mistake. But I hope you guys will never make the mistake. But even if you'll make it, that's fine, because making the mistakes is a representation that you are doing something really great. So it was all about this use of adverb. I hope you guys have liked it. If you like this video, give a thumbs up to it, and if you're watching this video for the first time, then subscribe it to get more videos like this. Inshallah, see you soon in my next video. Till then, take care. Goodbye. A girl with good intentions, yeah, she made some bad decisions.